हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही बेसिक सा HTTP GoLang का सर्वर बनाएंगे। ठीक है। we'll use the standard library like you could see here। ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब वो है जो GoLang के साथ ऑलरेडी बंडल्ड आता है, कुछ भी अलग से इंस्टॉल नहीं करेंगे अनलेस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो हम यूज करेंगे नेट HTTP पैकेज जो GoLang में ऑलरेडी आता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। वो एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में आती है। ठीक है। दिस विल हेल्प अस गेट अप एंड रनिंग विद वेब सर्वर। ठीक है। a TCP HTTP server। ठीक है। encoding JSON is to transmit basically encode decode JSON। ठीक है। because what we'll be doing is we'll be transmitting bytes। हम bytes आगे पीछे कर रहे होंगे और तो अपने JSON फॉर्मेट को bytes में लाना एंड bytes को JSON में लाना, उसके लिए हमें ये encoding JSON चाहिए। एंड log is to log out a few things। ठीक है। अगर हमें कहीं भी कोई प्रिंट मारना है, कोई इंफॉर्मेशन कंसोल पर डालनी है, तो वो हम लॉग से करेंगे। इस वीडियो के लिए कंस्ट्रेंट्स ये है कि हम तीन सिंपल एंड पॉइंट्स बनाएंगे। एक HTTP सर्वर बनाएंगे बिना किसी मिडलवेयर के, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे HTTP सर्वर कितना जल्दी बन सकता है। ठीक है। एंड अनदर कंस्ट्रेंट इज बिल्डिंग इट अंडर 10 मिनट्स। ठीक है। हमारे 10 मिनट्स में आई थिंक 2 मिनट, 1.5 मिनट ऑलरेडी जा चुका है। 1.5 मिनट हो चुका है, तो वी आर ऑलरेडी शॉर्ट, सो लेट्स स्टार्ट। वील बी heading over to our YouTube, then maybe heading over to the dev, go simple HTTP, maybe just head over to go simple HTTP, go mod init and I'll just write go simple HTTP, क्योंकि although अगर मैं इसका कोड पब्लिश भी कर दूँ तो भी मैं कोई से इंस्टॉल नहीं कर पाया। I'm not going to use this as a library। ठीक है। तो I think it works fine। I'll just create a main.go and we'll open our favorite editor। ठीक है। I'm using NeoVim, you could use whatever you want, अपनी अपनी पसंद होती है। we'll use log.printf just to see if this is actually working। So we have simple HTTP server, simple, okay, it means implementation, and let's see if go run dot works। Yes, we got the log। ठीक है। and log में time आता है which is very handy for us। ठीक है। I would suggest कि start using log instead of FMT। ठीक है। FMT के खुद के यूजेस हैं, बट अगर स्पॉन्सर पे कुछ डालना है तो start using log। ठीक है। वो बहुत काम आएगा इंस्टेड ऑफ अ सिंपल फॉर्मेट प्रिंट। ठीक है। then let's get a mux। mux is basically HTTP new serve mux। this is mux is short for multiplexer, which means कुछ ऐसा जो बहुत सारी चीजों को मिला के एक जगह ला के रखते। तो mux is basically हमारा सर्वर। ठीक है। what you would normally get, and http dot listen and serve the mux, but on a certain address, so I'll just call it adder and हम उसे यहाँ define कर देंगे। this is of type string and I'll run it on 5K। ठीक है। और यहाँ क्योंकि ये कोई प्रिंट नहीं मारता, आई वुड लाइक टू शो यू दिस, बट यहाँ पे देखो, यहाँ ओके लॉग इज नॉट यूज्ड, सो फॉर नाउ लेट्स कमेंट दिस आउट। ओके। कोई लॉग नहीं आया, इट इज रनिंग बट कोई लॉग नहीं है। ठीक है। तो जस्ट टू नो कि इट इज रनिंग, विल लॉग आउट समथिंग, विल जस्ट से लॉग printf that is HTTP server running at maybe running on this particular string, which is the address। okay। ये ये एरर भी देता है, बट क्योंकि हम बहुत ही ग्रेसफुल शटडाउन नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इट जस्ट टू लॉग डॉट पेटर्न एरर। ठीक है। मोस्ट केसेस में ये नील होगा बिकॉज देयर वाज नो एरर, बट लेट्स से कि कोई एरर यहाँ आता है तो ये हमें यहाँ पे एरर दे देगी लाइक दिस। ठीक है। तो this is all you need to start a website। ठीक है। now this is running, it does not do anything। ठीक है। तो हम इससे कुछ करवा लेते हैं, तीन सिंपल एंड पॉइंट्स बनाते हैं। उससे पहले we need a handler। ठीक है। we'll just call it no of handler। this will take the response writer। ठीक है। which is basically अगर JS वाले एनवायरनमेंट से बात करें तो दैट इज बेसिकली अ सेकंड पैरामीटर इन रिक्वेस्ट रिस्पांस
वाला हैंडलर। तो इसमें थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा है, इसमें हम रिस्पॉन्स राइटर पहले लेते हैं एंड रिक्वेस्ट का पॉइंटर बाद में लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्स राइटर इज नॉट अ पॉइंटर, इट्स डायरेक्ट इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि राइटर का एक ही इंस्टेंस है। रिक्वेस्ट इज अ पॉइंटर बिकॉज इट इज मूव्ड अराउंड अलॉट। ठीक है, और उसमें काफी डेटा हो सकता है। तो व्हाट वील डू इज we'll do json.new encoder. Okay, this is to write the data where I want it to be written on the response writer w, and encode the body. Body, I'll just write body here as is. Okay, and this is another way of handling error. ठीक है, कि अगर ये run करो और if there is an error, it means error is not help. ठीक है, so we could do something. So I just want to log range and error. Let's just log the error as is. ठीक है. Now we need body. I'll just call body map string, and for now I'll just make it map string. So map string, and message is we'll just say no. Okay. So it does nothing. यहाँ पे between this and this, we'll define our endpoints and handlers. Okay, we'll just say mux.handle func, which means handle via a function. I want to handle get slash maybe login, let's say, and no of handler. Login is there because most people are familiar with it, logout. And the another one could be profile. ठीक है, ये now to know कि ये जो response आया ये कहाँ से आया। ठीक है, we'll just add another parameter called path, and this will be r dot path if you write. ठीक है, and you get url dot path and this path. ठीक है, but I'm using url dot path. अपने केस के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। And now we have a web server and we could run a curl. ठीक है, by default curl sends a post request. So localhost 5k on slash login. ठीक है, I got from login. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आया, but I did get the response like this, message no op. Okay, we could try the same thing on logout. Okay, and on profile. And there you go. You have a very simple web server in GoLang using no external packages. ठीक है, in under 10 minutes. ठीक है, we still have about 2 minutes. ठीक है, but if you are open enough, ठीक है, I think we can build out a very simple stuff here, which is error handler. ठीक है, you could write a similar error handler like this. ठीक है, and what it will do is it will take that and an error. ठीक है, and it just writes error is yara.error. ठीक है, it does nothing else. It is like error handler. Okay, I don't need this, and it does the same thing. तो ये error handler आप as is use कर सकते हैं। ठीक है, ये error handler direct यहाँ नहीं लगेगा। You'll be using this somewhere from within your endpoints like this. ठीक है, like error handler maybe on w errors.new, which is how we create a new instance of an error. And I'll just say internal server error. ठीक है, to extend this even further, you could send in the status code. ठीक है, क्योंकि every error has its own status code, and to write the status code, you do w.write header. ठीक है, which is how you write the status code in standard mux. And that's it, you're done. तो यहाँ पे to just do if loop. Okay, because that's how we're gonna do it. And then return because आगे की ना। ठीक है, so if false, तो यहाँ पे you could do add whatever condition. Okay, and this is done. Now you have a web server in under 10 minutes with a very basic error handler, a very basic JSON handler, and a very simple set of endpoints. In under 10 minutes, you have a very simple web server. Subscribe if you want to. Okay, if you want more stuff like this. See you on the next video, and till then, peace.